Hello. Hey sir, good Good afternoon. evening, sir. Yes, sir. Okay, so what was happening? I was thinking you cannot see. So you cannot you can hear me and you can see the slides, right? Yes, sir. Yeah. So to everyone, I don't know why you didn't like came yesterday. No, because I was late in starting, so now you should come every day, and then we could easily continue the class. Okay. So, and then at the because it's a little bit different course, I want all of you to be present on the initial classes, which will help understanding the concept. So anyway, welcome to the fourth class of nanoscale modeling and simulation. We, we were talking about biological macromolecules, and we were talking about how they form things. Today we will start with three secrets. I try to play with words here. So 3C. C means 3C from three covalent bonds property, which is configuration, conformation, and chirality. These three are extremely critical for biological molecules, and configuration is the spatial arrangement of atom in a molecule. For example, a carbon atom with four single bond bonded with four different atoms chemical groups, which you could see here, has different configuration. If you look at these two, they are same, but they have different configuration. Changing configuration require bond breakage. You cannot just rotate and the molecules become same. So they are not differentiated by a operation which is not involving a bond break. To make one compound, the L amino acid, to D amino acids, you have to break the molecule. You have to do new synthesis. So they are different. Configuration defines the molecule's chemical reactivity and type of bonding it participates in. Why? Remember, I talked about things that uh, when you have your hands like this, so they look same, but you align and you get one here and another here. So they could not be aligned. So they are stereoisomer. When two same atomic content molecules are different by their configuration, they are generally called stereoisomers. Okay. We will talk about the importance of configuration and stereoisomer more in detail. Conformation are spatial arrangement of atom in a molecule that can be obtained by rotation of atoms about a single bond. So, whereas configuration you cannot attain by rotation, conformation you can attain by rotation, no bond breakage required. So, if you see here, if you rotate it, you get it. Then chirality, configuration gives you chirality. Chirality is the property of a molecule that makes the molecule and its mirror image non-superimpossible. If there are no chiral centered in the molecule is not chiral. So, is a chiral, what is a chiral center? If let's say carbon have four bonds, if the four atoms or molecules or groups connected with these four bonds are different, then this carbon become chiral. Why chirality is very important? Because if you look at the amino acids we are talking about, there are 20 amino acids if you remember, and only glycine is achiral, all the other 19 are chiral. Now when it is chiral, they could be either D amino acid or L amino acid, right?
You understand what I'm saying? Hello? Do you understand what I'm saying? Yes, sir. And you take 5 minutes to say yes, sir. And others don't even get the see. If you don't get the energy to say yes sir for 15 times in one class of 1 hour, how I could get the energy to talk about all these things? It's easy to go and say that the class is not exciting and all these things. Do you think about yourselves who could not even like willing to say like or respond 10 times in a whole class? So these are the centers which makes different. I try a lot, but this type of student group is making like real bad impression to the energy of the class. So why do the three secrets matter? The three covalent bond, the 3C matters. It matters in shape of biological molecules like the folding of a protein or DNA or RNA, the stability of a molecule, and recognition and function of biological molecules like binding and interactions. As I told, all the polymers have building blocks who are called monomers. In case of protein, amino acids, the 20 amino acids we are talking about are the monomers. The nucleotides are the monomer for polynucleic acids. The monosaccharides are the monomer for carbohydrates, and the fatty acids are the monomer for lipids, fatty acid as well as glycerol. So those are the building blocks by which the biology is developed, because biology is majorly developed by these four macrobiological macromolecule: protein, nucleic acid, carbohydrate, and lipid. So if we now look at the composition of the biological macromolecule and a glimpse of their function. So for considering the property of atom, for protein, it is carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, and sulfur. Whereas when protein have to be phosphomodified post-translational modification, it is the phosphate. So protein have all the elements which are carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur in their structure, and phosphorus comes into the through the post-translational modification. Nucleic acid have carbon, hydrogen, oxygen, phosphorus, and nitrogen. They don't have sulfur. Carbohydrate have carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen, and lipid have only carbon, hydrogen, and oxygen. So the building blocks of protein, as we talked about, amino acids, nucleic acid, nucleotides, carbohydrates, simple sugar or monosaccharides, lipid, fatty acids, and glycerol. Do they form polymers? Yes. Protein forms polymer. What type of bond? Peptide bond. Nucleic acid, yes, they also form polymer. What type of bond? Phosphodiester bond. Carbohydrate, yes, they form polymer. What type of bond? Glycosidic linkage of various types. Various type means it could be between different like in the straight chain, in the branch chain, and all. Lipids, interestingly, cannot form polymer and form various di and triglycerides.
What are the intramolecular interaction? Covalent protein, it is covalent bond which is disulfide, the only covalent bond which form and break in a physiological condition. Then there are non-covalent bond like hydrogen bond, charge based like salt bridges, van der Waals and all. Hydrophobic interactions. For nucleic acid, it is hydrogen bond and stacking interaction, the base-base stacking. For carbohydrate, it is hydrogen bond, and for lipid, it is van der Waal or hydrophobic interaction. What are the functional role in cell? For protein, it is enzymes. They do all type of functional works. Proteins are the functional unit of the living system. Then there are structural proteins, sensors, storage protein, receptors, and whatnot. Nucleic acid, they are the storage of genetic information. They sometimes they work on enzyme and like ribozyme, and they're part of ribosome as well. Carbohydrates are storage of energy, structural recognition and interaction. They take important part. For lipids, they are membrane, signaling molecules, and storage molecule. Now we will go to a very important segment of our course where we are trying to answer a very interesting question. You have seen that we have four macromolecule: protein, nucleic acid, carbohydrate, and lipid. But how we could read them, how we could decode the biological macromolecules? Anybody, any idea? It might be based on behavioral. देखो, ऐसे तो मैं अच्छा आदमी हूँ, पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम लोग ऐसे करने लगोगे ना, फालतू का मेरा भी इंटरेस्ट चला जाएगा, क्लास भी इंटरेस्टिंग नहीं होगा. मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम लोग सुन नहीं रहे हो. इट वुड नॉट रिजल्ट मतलब इन ए गुड वे, राइट? एक अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, एंड मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम लोगों का दो चार बातें. इतना भी तुम कोई बड़े नहीं हो गए हो कि इतना भी नहीं बोल पाओगे. मैं चुपचाप बैठा हूँ, आप लोग घर में वो करके गाना सुन रहे हो, ऐसे कैसे होगा? मैं यहाँ बोले जा रहा हूँ, नया सब्जेक्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ. नो अटेंडेंस, नो रिस्पॉन्स. मैं दो बार बोलूंगा ठीक है, बट बोलते बोलते वही परेशान हो जाता है ना हम लोग. ये बहुत आसान है जाके बोलना, सर ने पढ़ाया नहीं, सर ने सिखाया नहीं, लेकिन कभी तुमने बोलने के टाइम अपना सोचा? एक मिनिमम रेस्पॉन्स, ये भी क्लास से ना पढ़ने के लिए बोला, ना क्लास से कुछ करने के लिए बोला, वो भी नहीं करना चाहते हो.
बड़ी बड़ी बातें, इंटरव्यू, स्टार्टअप, ये तुम टीचर के साथ बात नहीं करोगे, जाके इंटरव्यू बोर्ड में बात कर लोगे, आइडिया पिच करके आओगे एंजल इन्वेस्टर को, कैसे होएगा? शुरुआत तो करो। एक बार नहीं, बार बार बोल रहा हूं मैं, कोई ये नहीं कर रहे हो। मैं मिनिमम क्या बोला, पढ़ के आओ, थोड़ा क्लास में आओ, सुनो, ये करो। मैं कभी ये नहीं करता, सब अच्छे ग्रेड सबको आए वही कोशिश करता हूँ, हर वक्त सबको लेके चलता हूँ। मुझे नहीं चाहिए करना ये सब, मैं करूँ ना करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग नहीं करोगे। करते करते मेरा इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। तुम लोगों को क्लास में इंटरेस्ट करने के लिए हम लोग कुछ भी करें, तुम्हारा मिनिमम भी फर्ज नहीं है थोड़ी भी हमें साथ देने का? एक अजीब सी सिचुएशन में दुनिया है, हम ऐसे पागलों की तरह बक रहे हैं यहाँ बैठ के। हमें भी हेल्प चाहिए, हमें भी मतलब रिस्पॉन्स चाहिए। क्लास होते जा रहा है, तुम सब बैठ के सुन रहे हो, कैसे सुनते हैं कोई? किसी को नींद आ रहा है हो गए, किसी किसी ने सुनी नहीं हो गए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आस्क मी क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन नहीं करते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रिस्पॉन्स करो, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, ऐसे कैसे होगा? So the first and foremost requirement to understand biological macromolecule is to read them. इन लोगों को पढ़ने का जरूरत होता है। सो किसे पढ़े? कार्बोहाइड्रेट को पढ़े, लिपिड को पढ़े, प्रोटीन को पढ़े एंड न्यूक्लिक एसिड को पढ़े। पहले ही हम बोल देते हैं कार्बोहाइड्रेट और लिपिड फैट के बारे में। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड देम बिकॉज इट इज नॉन टेम्पलेट। नॉन टेम्पलेट मतलब क्या है? एक सेल में, जैसे मैंने बोला, सेल इज द यूनिट ऑफ द एंटायर बॉडी। एंटायर बॉडी में सेम टाइप का कंटेंट होता है सेल के अंदर। तो एक सेल में जो प्रोटीन, ए सेल में जो डीएनए कंटेंट, जो आरएनए कंटेंट, जो प्रोटीन कंटेंट है, बी सेल में भी वही कंटेंट होएगा, वही टाइप के प्रोटीन, डीएनए, आरएनए होंगे। बट बिकॉज दे आर सिंथेसाइज बेस्ड ऑन ए टेम्पलेट, तो एक बेसिक टेम्पलेट के रिपीट होता जाता है। बट कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, दे आर नॉन टेम्पलेट बेस्ड। जो रिसोर्स, तुम कैसे खाना खा रहे हो, क्या जा रहा है, क्या परिवेश में, द एनवायरमेंट उसमें क्या है, उसके हिसाब से आ जाता है। सो यू आर क्लूलेस, क्योंकि एक एक सेल को आप करो तो बाकी सेल के बारे में पता चल जाएगा यहां, लेकिन एक सेल का कार्बोहाइड्रेट या लिपिड फैट देख के आपको दूसरे सेल का कार्बोहाइड्रेट या लिपिड कंटेंट के बारे में पता नहीं चलेगा। देन इट इज नॉन स्टैंडर्ड। जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है, ये एक रूल मान के होता है, एटीजीसी का, सेम बॉन्ड, सेम टाइप ऑफ लाइक कनेक्टिविटी एंड ऑल दीज थिंग्स स्टैंडर्ड है। प्रोटीन का भी 20 अमीनो एसिड उसके ये, बट यहां ऐसे कुछ रूल ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट ये कहीं जाके सेम कार्बोहाइड्रेट भी ले लो, कहीं जाके 1 to 1 बॉन्ड कर रहा है, कहीं जाके 1 to 4, कहीं जाके अल्फा, कहीं जाके बेटा। सो ए लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स आर पॉसिबल। एंड एज आई से, इंडिविजुअलिस्टिक, लोगों का क्या खाना खा रहा है, पोषण क्या ले रहा है, हाँ, कहाँ किस एनवायरमेंट में रह रहा है, उनका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, हजम कैसे कर रहा है, हाँ, पच कैसे रहा है वो खाना, ये सब कुछ डिपेंड होते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, इनका कोई
इनको आइडेंटिफाई करने का कोई बेस नहीं है, तो इसीलिए जनरली लोग कोशिश नहीं करते कार्बोहाइड्रेट लिपिड फैट को पढ़ने के लिए। प्रोटीन के बारे में ये आप बोल सकते हो, हाँ प्रोटीन को सीक्वेंस करने का, सीक्वेंस मतलब ये जो पढ़ रहे हो आप उसको सीक्वेंसिंग बोलते हैं, तो प्रोटीन को सीक्वेंस करने का कोशिश किया गया है। इट्स ए प्रैक्टिकल प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ ए प्रोटीन और पेप्टाइड। सो एक पॉलीपेप्टाइड है, आप उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। देयर आर like this may serve to identify the protein or characterize its post-translational modification। तो एक तो प्रोटीन के जो किसके बाद कौन अमीनो एसिड है वो पता चल जाएगा, फिर उसके साथ मैंने बोला पोस्ट ट्रांसलेशन कुछ ग्रुप ऐड होता है, फॉस्फेट, एसीटेट, मिथाइल, ये सब केमिस्ट्री ऐड होता है, तो उसके बारे में भी पता चल जा सकता है। The two major direct method of protein sequencing are mass spectrometry। मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है? मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक हाई रेजोल्यूशन टेक्निक है जहां क्या मास है, एक्चुअली मास एंड चार्ज के रेशियो, उसको बोलते हैं M/Z रेशियो। वो M/Z रेशियो से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि किसके बाद कौन सी अमाइनो एसिड है। बट देयर इज अनदर बायोकेमिकल based method which is called Edman degradation। So mass spectrometry method are now the most widely used for protein sequencing and identification, but Edman degradation remains a valuable tool for characterizing especially प्रोटीन जो होता है वो N टर्मिनस से C टर्मिनस सिंथेसाइज होता है, तो N टर्मिनस से आप सीक्वेंस करो तो उस प्रोसेस को एडमन डिग्रेडेशन बोलते हैं। तो प्रोटीन के केस में जैसे मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट या फैट की तरह प्रॉब्लम नहीं है, प्रोटीन के टेम्पलेट है, प्रोटीन स्टैंडर्ड है, यू डोंट हैव टू बी क्लूलेस। लेकिन देयर आर प्रॉब्लम्स, क्यों? क्योंकि इफ यू लुक एट डीएनए, आरएनए, वहां एटीजीसीयू ये 5 ही एलिमेंट है, हाँ वो भी डीएनए में एटीजीसी है, प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड है, सो उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत वैरायटी आता है, और दैट्स व्हाई इट इज नॉट वेरी इजी एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव स्टिल नाउ। So we have already talked about carbohydrate, lipid, we have concluded that they have problem। प्रोटीन पे किया जा सकता है बट उनको भी वैरायटी के कारण प्रॉब्लम है, तो पड़ा रहा डीएनए। We already know about this। Now क्या है? We know that A double bond T and C double bond G। ये हमें पता है। तो if you look at the process of replication, step 1, and you will understand why I'm talking about this। Step 1 is unzipping the DNA molecule जो double stranded है, ये unzip करेगा as the hydrogen bond between A and T and G and C they are broken। और ये काम करने के लिए इन्होंने जो एंजाइम को रखा है उसका नाम है हेलिकेज। सो द डीएनए मॉलिक्यूल unzips as the hydrogen bond between the base pairs are broken between A and T, two like double hydrogen bond, and G and C 3 hydrogen bonds। The enzyme helicase causes this unzipping to occur। अनजिपिंग के बाद सेकेंड स्टेप पे रेप्लिकेशन होता है। देखो वी टॉक अबाउट दिस अर्लियर, दिस इज ए टेम्पलेट। सो टेम्पलेट के उल्टी तरफ में ऐसे ऐसे वो ट्राइफॉस्फेट के हिसाब से आते हैं और 2 फॉस्फेट उन्होंने छोड़ देते हैं। इफ ट्राइफॉस्फेट के हिसाब से आ रहा है, एक फॉस्फेट यहाँ रह रहा है और बाकी 2 फॉस्फेट रिलीज हो रहा है। Can you tell me why they come with 3 phosphates? उनको एक ही फॉस्फेट चाहिए तो मोनोफॉस्फेट के हिसाब से क्यों नहीं आता, क्यों ट्राइफॉस्फेट के हिसाब से आता है?
Anybody? Hello, sir. Sure. Sir, maybe because of the stability. Name first. Sir, Rutuja. हाँ रुतुजा बोलो. Some monophosphates are not stable enough, so triphosphates stability की वजह से ऐसा क्यों बिकार्बोनेट. लगा तुम्हें? मतलब मोनोफॉस्फेट स्टेबल नहीं है, इसका केमिकल मतलब कोई एक्सप्लेनेशन? सर क्योंकि यूजुअली मोनोफॉस्फेट्स का मतलब रिएक्शंस नहीं देखा है ज़्यादा, समझा नहीं. तो they tend to bind together किसके to साथ? form a सर ट्राइफॉस्फेट बनने के लिए. मोनोफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट बनने की कोशिश करता है. मतलब सर आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन. नो, दिस इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई. इसलिए तुम एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे हो, वो बात नहीं है. क्योंकि मोनोफॉस्फेट को डाइफॉस्फेट बनने के लिए आपको डेल्टा जी पता है? यस सर. व्हाट इज डेल्टा जी? फ्री एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन, राइट? यस सर. एक रिएक्शन जो कि इजीली हो जाएगा, उसका डेल्टा जी क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव. करेक्ट. फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल जी शुड बी नेगेटिव. फॉस्फेट ऐड करने का डेल जी पॉजिटिव है. You understand now what I am trying to say? यस सर. यस सर. Yeah. So जो तुम्हें जैसे लगा, it's not because you could not being able to explain it. Actually, what you are trying to say is wrong. ये नहीं कि मतलब मोनोफॉस्फेट से इजीली ट्राइफॉस्फेट हो जाता है, इसीलिए ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं. क्योंकि उसके लिए एंजाइम लगता है, उसके लिए एनर्जी लगता है. ओके ऋतुजा, यस सर. यस सर. एनीवन एल्स? Smita, what do you think? Asmita, what do you think? Sir, I think nothing is coming to mind actually. No. Yes, man. No idea, sir. Hmm? Don't know. What you don't know? Uh, एक मोनोमर जब एक पॉलीमर बनेगा, तेजस मानो, yes, sir. एक मोनोमर जब एक पॉलीमर बनेगा, Yes, sir. उस प्रोसेस का डेल जी क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive, sir.
क्यों? Think positive. हम्म I'm not sure, sir. I'm just तो पॉजिटिव क्यों बोला? हम थोड़ी तुक्का मारने आए यहाँ. When you say पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव होगा? हम्म तेजस्मन, yes, sir. क्या पॉजिटिव होगा? जो तुमने पॉजिटिव बोला, तुक्का मार के भी बोला, लेकिन क्या पॉजिटिव होएगा? एक रिएक्शन जो होता है उसके थर्मोडायनामिक्स कैसे डिफाइंड होता है? एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, ये कौन सा थर्मोडायनामिक पैरामीटर से हम बोलते हैं? नो आइडिया. No idea, sir. दिस इज द फर्स्ट एकेडमिक कोर्स. क्या बैकग्राउंड है आपका? Biotech. बायोटेक है. तो आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा नहीं? हाँ. So anyone, if there is a reaction, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, हमें कैसे पता चलेगा? सिर्फ So, Akanksha here. श्योर आकांक्षा. So, it depends on free energy. फ्री एनर्जी. सो रिएक्शन जब स्पॉन्टेनियस होगा तब फ्री एनर्जी क्या होगा? Negative, and if it is not spontaneous, then it is positive. Correct. So what is the full equation of del G? What are the component of del G? Minus RT ln Minus dot to RT ln on K. reactant. In other way, this is one way. In other way, considering other components, del H minus T del S, right? Yes. So जब मोनोमर से पॉलीमर होगा, एनी प्रोसेस जहां की मोनोमर पॉलीमर बन रहे हैं, उसके डेल्टा जी क्या होगा? Sir, actually it depends whether the polymer which is formed, it has high energy or low energy. I mean, अच्छा, we have to सुनते find हैं. out whether the delta G is we have to find out first the delta G of monomer and the delta G of polymer. So if it is negative, then it is spontaneous, and if it is positive, then it is non-spontaneous. मोनोमर की क्यों डेल्टा जी क्या? आप क्या बोल रहे हो? आप समझ रहे हो? मोनोमर पॉलीमर के डेल्टा जी. No, sir, the reaction का delta G, free energy of that reaction. रिएक्शन किसके साथ किसके रिएक्शन? वही तो मैं बोल रहा हूँ. जो रिएक्शन होएगा, मोनोमर बॉन्ड फॉर्म करेगा तभी तो पॉलीमर बनेगा, Yes. राइट? है कि ना? Yes. तो बॉन्ड फॉर्मेशन के एनर्जी is a question which is del H, actually enthalpic energy. Yes. But there is another thing which is not saying you anything. Minus delta S. S क्या है? Sir, entropy. तो एंट्रोपी चेंज कुछ बोल नहीं रहे यहाँ. So there will be decrease in entropy because There will be. the decrease in entropy, Why?
Because randomness is decreasing. Yeah, that and when you are talking about DNA synthesis, which we are talking here, it's a huge change. So delays would be very, very negative, So, right? So it contribute to towards del G positive. समझ में आ रहा है? yes, sir. Anyone not understanding? जसमान आपको समझ में आ गया? तेजस्मान? Everyone, बाकी everyone, तेजस्मान left, but बाकी everyone, you guys understood? Yes, sir. Yes, sir. So can you anyone summarize क्या हो रहा है? शशि? Shashi, can you explain? Yes, sir. Yeah, please. So, सर लॉस ऑफ एंट्रोपी के कारण ये हमारा जो प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल रहा होता है सर. तो फिर ये रिएक्शन होगा कैसे? ये होते हैं ना, जब डेल जी पॉजिटिव हो जाएगा तो Yes, sir. रिएक्शन इधर होगा नहीं, और वो रिएक्शन को होने के लिए आपको बाहर से टेम्परेचर, प्रेशर या कोई एक्सटर्नल फैक्टर आपको देना पड़ेगा. राइट सर. तो यहाँ आप क्या करोगे? रिएक्शन नहीं होगा या बाहर से टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा दोगे? Sir, Asmita here. Sure. Sir, since from our last discussion, means the whatever we were discussing previously, since we got to know that the del G for this reaction is very high, so the Very highly positive. highly positive. Mhm. So there are 3 phosphate groups. So when 2 phosphate groups are removed, so the amount of energy that is released, that is used to decrease the del G value, so that the reaction is spontaneous and the polymerization happens. So that's the reason there are 2 phosphate molecules, extra molecules added, right? Yes, sir. So I'm now summarizing. Now like we understand half of the thing. So any polymer, be it a DNA or RNA or protein, when form one amino acid you have a protein, when from one nucleotide you have a DNA or RNA, because it's a long chain polymer, a lot of monomers are converted to polymer,
So they are reducing the entropy of the system in a significant amount. The delta G of the process, the delta G of this polymer formation is highly positive. So if delta G is highly positive, there are two options. One, you have to compensate that energy by some process, or you have to provide टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा. सो एक सॉल्यूशन है, आप खाना खाओ, सो चीजें जा रहे हैं, शुगर बुगर जा रहा है, और फिर चूल्हा में बैठ जाओ, या अपना सिस्टम में ये जो टायर भरने का प्रेशर होता है वो देके मुंह में रख कर बढ़ाओ, which are all impossible processes, right? सो एक प्रोसेस है एनर्जी बैलेंस करना पड़ेगा, एंड एज अस्मिता टोल्ड, this energy balance is done by the release of this inorganic phosphate. Every inorganic phosphate release, there is minus 7.3 kilocalorie of energy per mole generated, which is compensating the entire process, making DNA formation or RNA polymer formation biologically possible. Is it clear? Yes, sir. But there are Yes, sir. other very interesting thing, and that is also the highlight here. How nature, take care of the biological processes. If you see, these are the nucleosides, right? Now, these nucleosides match with the template by hydrogen bond, right? Do you understand what I'm saying? One A is coming here, that is from two hydrogen bond with T, or T comes, it forms hydrogen bond with A. C comes hydrogen bond with G. G comes hydrogen bond with C, right? Yes, sir. Now, सोचो इनकी तरह ये जो यहां फॉर्म कर रहा है, इनकी तरह हम हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने वाला और चीज ला दूं जो सेम हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये ऐसे घुस जाए, तो डीएनए सिंथेसिस बंद कर सकते हैं. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो? नो होने से बताओ. आर यू गेटिंग इट? अरे बोलो भाई. Sir, the compound that you're talking about, is it completely analogous to the nucleoside? आपको उतना क्यों ये करना है? हाइड्रोजन बॉन्ड सेम फॉर्म कर रहा है, तो केमिस्ट्री ऐसा होगा तभी तो करेगा ना. कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है थॉट, राइट? ये जो यहां देख रहे हो ना, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, राइट?
Can you see the slides now? Yes, sir. So याद है ये जो हो रहा था ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा था, राइट? यही जीसी को मैं यहां दिखाया. कैन यू सी दिस इज द जीसी हाइड्रोजन बॉन्ड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes, sir. इसको हम डीजी और डीसी बोलते हैं क्योंकि इसके सुगर जो है वो डीऑक्सीराइबो है. डीएनए के केस में, आरएनए के केस में 2 हाइड्रोक्सिल रहता है. ओके, सो सी जो है वो डीऑक्सीसाइटिडीन बोलते हैं. ओके, नाउ इफ यू टेक ए कंपाउंड लाइक दैट, ये सेम ही है लाइक डीऑक्सीसाइटिडीन, लेकिन इसके 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल नहीं है यहां, इसीलिए इसको डाई डीऑक्सीसाइटिडीन बोलते हैं. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Now if I put this dideoxycytidine here, it could form the same hydrogen bonds as deoxycytidine is like forming, right? Yes, yes, sir. Here is the fun. Now if it is normal, you see the DNA chain synthesis would be continued. But if you have something which is lacking this 3 prime hydroxyl, then that leads to चेन टर्मिनेशन. सिंथेसिस टर्मिनेट हो जाएगा और डीएनए से मतलब सिंथेसिस टर्मिनेट होगा तो सेल डेथ हो जाएगा. तो ये जो मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स. एंड ये कोई भी ऐसा होके घुस नहीं जा पाते बिकॉज इसको 3 फॉस्फेट लेके आके ये घुसते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. मतलब ये 3 हाइड्रोक्सिल नहीं बनाना पड़ता तो कहीं से भी ये मॉलिक्यूल आ जाता, ये घुस जाता डीएनए में और डीएनए सिंथेसिस बंद कर देता और सेल डेथ हो जाता. बट 3 फॉस्फेट करना है, इसीलिए आप कहीं से भी इसको घुसा नहीं सकते. एक नंबर, यू कैनॉट एंटर इट एनीवेयर. एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. अभी देखो, आप ठीक से समझते तो आप एक क्वेश्चन मुझे करते जरूर कि सर ये भी तो हो सकता है कि 3 फॉस्फेट लेके वो सेल के अंदर घुस जाए. मेरे क्वेश्चन ये है कि आज हम लोगों में कोई ये कंपाउंड को खा ले. दिस कंपाउंड यू कंज्यूम थ्रू योर डाइट. ओके, क्या ये आप सेल के अंदर घुस के आपके सेल को डीएनए सिंथेसिस बंद करके मार देगा? Are you getting my question? Hello? Are you understanding the question? मैं ये बोल रहा हूं कि ये कंपाउंड यहां घुस जाए तो इसके 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल नहीं है, तो ये जाके डीएनए चेन टर्मिनेट कर देता है. लेकिन इसको मोनोफॉस्फेट फॉर्म में ये घुस नहीं सकता. यू ऑलरेडी टोल्ड बिकॉज डेल जी पॉजिटिव है, तो इसको ट्राइफॉस्फेट होकर घुसना पड़ेगा. तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि इफ वी ईट समथिंग इन आवर डाइट, क्या ये जाके हमारे सेल के अंदर घुस के सेल को मार देगा? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन?
किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया? हेलो? No, sir, understood the question. हाँ, तो क्या होगा फिर? क्या ये मार देगा आपको? आंसर इज ये मारेगा नहीं। क्यों? यही मैं दिखाना चाहता था कि हाउ स्पेसिफिक बायोलॉजी इज, हाउ ब्यूटीफुली बायोलॉजी कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ कंपाउंड्स व्हिच दे वांट और डोंट वांट और व्हिच माइट मेक सम प्रॉब्लम इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। ये 3 फॉस्फेट रहने से क्या होगा? ये देखो यहां नेगेटिव चार्ज है, देख पा रहे हो आप? You see negative charges? Yes, sir. So because of this a compound is very negatively charged। और हमारा जो सेल है उनके मेम्ब्रेन जो है उसके जो बाहर की साइड है, रिमेंबर वी टोल्ड द मेम्ब्रेन कुड हैव the membrane would have हाइड्रोफिलिक हेड। वो हाइड्रोफिलिक हेड पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, मेम्ब्रेन के उस पार वो नेगेटिव है। सो नेगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन के साथ ये नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट का रिपल्सन होएगा और वो ये कंपाउंड अंदर घुस नहीं पाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वेरी इंटरेस्टिंग। One, as Asmita correctly understood, like described, कि the problem of del G, the problem of del G being positive to form a polymer would be solved by the expense of 2 phosphates, but at the same time it gives the molecule selectivity। So जो भी ट्राइफॉस्फेट होगा वो सेल के अंदर होना पड़ेगा, सेल के बाहर से कोई कंपाउंड, कोई न्यूक्लियोसाइड एनालॉग जो तुमने खा लिया या कुछ भी, वो अंदर जाके सेल को मारेगा नहीं। ओके, so this is the process of replication. This is very specific and it never allow the unwanted nucleoside analogs to entry. So this is called complementary base pairing, and the complementary nucleotides move into the position to bond with the complementary bases on the DNA chain. Third one, form the new sugar phosphate molecule. So template है, the nucleotides join as the sugar and phosphates bond to form the new backbone. This is done by the enzyme जिसको बोलते हैं DNA polymerase। मैं यहाँ एक interesting इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूं आपके लिए। फॉर प्रोकैरियोट्स कौन है? जो बैक्टीरिया आप देख रहे हो ये सब प्रोकैरियोट्स है। फॉर प्रोकैरियोट्स ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या बेस इंकॉर्पोरेट हो रहा है, क्या घुस रहा है, उसको चेक नहीं करते। आप चेक को क्या बोलते हो? प्रूफ रीडिंग। सो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो बैक्टीरिया में है वो चेक नहीं करते, व्हेयर एज ह्यूमन में या हायर ऑर्गेनिज्म में ये चेक करते। तो बैक्टीरिया में हमेशा गलती होने का चांस होता है, व्हेयर एज हायर ऑर्गेनिज्म में ये रेप्लिकेशन के टाइम कोई गलती जनरली नहीं होता। So this is all I'll talk today. Again, if you have any question, you could ask. I hope today you don't have many questions because we have already discussed. So thank you. But anyone have any question? Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.